In this video, we will discuss the topic Introduction of Monetarism. Monetarism is a theory of macroeconomics which states that increases in the money supply are necessary and sufficient condition for inflation. Changes in money supply affect aggregate demand in the economy and thus prices. Monetarists assume that demand for money is not the function of rate of interest, but demand for goods, mainly investment, is the function of rate of interest. On the other hand, Keynesian economics, sometimes Keynesianism, named for the economist John Maynard Keynes, are various macroeconomic theories about how economic output is strongly influenced by aggregate demand, that is, total spending in the economy. In the Keynesian view, aggregate demand does not necessarily equal the productive capacity of the economy. Instead, it is influenced by a host of factors. According to Keynes, the productive capacity of the economy sometimes behaves erratically, affecting production, employment, and inflation. Keynesian economics developed during and after the Great Depression from the ideas presented by Keynes in his 1936 book, The General Theory of Employment, Interest, and Money. Keynes' approach was a stark contrast to the aggregate supply focused classical economics that preceded his book. So, there are three videos on monetarism. In this first part, we will discuss introduction. What is the introduction of monetarism? The monetarist revolution refers to the contributions made to monetary theory and policy by Professor Milton Friedman and his colleagues at the University of Chicago. तो मॉनेटरिज्म हम किसको कहते हैं? मॉनेटरिज्म हम कहते हैं कि मॉनेटरी थ्योरी एंड पॉलिसी में जो भी कंट्रीब्यूशन मिल्टन फ्रीडमैन ने की हैं या उनके कलीग्स ने की हैं, शिकागो यूनिवर्सिटी के कलीग्स ने, दैट इज़ द मॉनेटरिज्म. इट वाज अ sort of revolution against the views of Keynesians. तो केन्स इनसे पहले आए थे 1936 में, मॉनेटरिज्म इनके बाद की बात है. तो केन्स के अगेंस्ट ये एक रेवोल्यूशन टाइप था, द कंट्रीब्यूशन ऑफ द मिल्टन फ्रीडमैन एंड हिज क्लीग्स. द केन्सियंस रिगार्डेड द मनी सप्लाई एज अ पैसिव फैक्टर. केन्स ने मनी सप्लाई को पैसिव फैक्टर माना है. On the other hand, monetarists assume that only money matters. It means money is the active factor, according to monetarism. क्यों? Because the quantity of money is capable of being controlled fairly, accurately by deliberate policy. एक तो जो मनी की क्वांटिटी है, इसको जो अथॉरिटी है वो कंट्रोल कर सकती है अपने अकॉर्डिंग, इकॉनमी की सिचुएशन के अकॉर्डिंग. जैसे इंडिया में आरबीआई मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है. क्वांटिटी ऑफ मनी मीन्स मनी सप्लाई. सेकंड, चेंजेस इन द क्वांटिटी ऑफ मनी कैन प्रोड्यूस सब्सटेंशियल चेंजेस इन द फ्लो ऑफ इनकम, प्राइसेस एंड अदर इम्पॉर्टेंट वेरिएबल्स. तो अगर मनी सप्लाई चेंज हो जाए, मनी सप्लाई को, क्वांटिटी ऑफ मनी मीन्स मनी सप्लाई, अगर हम मनी सप्लाई को चेंज कर दें, मनी सप्लाई को चेंज करके हम इकॉनमी में
इनकम को, प्राइसेस को अफेक्ट कर सकते हैं, या और जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट वेरिएबल्स हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के, उनके ऊपर इसका अफेक्ट पड़ेगा मनी सप्लाई के चेंज होने का। थर्ड, द रिलेशनशिप बिटवीन स्टॉक ऑफ मनी एंड अदर एसेट्स आर रिलेटिवली स्टेबल एंड डिपेंडेबल। तो 3 कारण बताए हैं मॉनेटरिस्ट लोगों ने मनी के एक्टिव फैक्टर होने के। एक तो क्वांटिटी ऑफ मनी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम इस पॉइंट को दूसरा मान लें, मनी का बाकी वेरिएबल्स के साथ रिलेशन है। और तीसरा, अगर हम इसको मान लें, तभी जो क्वांटिटी ऑफ मनी में चेंज है वो इन वेरिएबल्स को अफेक्ट करती है। तो इसको हम सेकंड पॉइंट रख सकते हैं, तो इसको हम थर्ड पॉइंट रख सकते हैं। दिस वाज अबाउट द introduction of monetarism. For features of monetarism and for criticism of monetarism, must watch other parts of this video. Thank you. Thanks for watching this video.